सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं समझ सकता हूँ कि काफी दिनों से जो है फैक्ट्री इंस्पेक्टर के ऊपर कुछ डेट्स नहीं आ रहे थे। So finally we are back, and almost from today onwards we are having 2 months, near about 2 months of time for preparation for this examination. Although we have already started the series, video series on this examination, that is the factory inspector conducted by JPSC. So, two videos has already been uploaded on it. So let us first decide the roadmap, how the things will be going and what we will be doing. We have completed two videos, and that videos were basically on the topic industrial safety itself. In this topic, industrial safety, we are doing the evaluation concepts, and within this concept we have been focusing on the different types of hazard and what are the preliminary terms that is used in the industrial safety, what are the different types of controls, and what are the different techniques that are used to avoid the hazards. Okay, that we have done. Now we have got the sufficient overview on this topic. Next onward, we will be starting with the occupational health. And in the occupational health also, see this topic, we will just go of the generalized concept in this topic, because occupational health is going to be covered in detail in here. Occupational health, which includes various subtopic, fitness to jobs, risk लाइफ। तो जब हम यहाँ पर occupational health को करेंगे तो यहाँ डिटेल में करेंगे। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ को हम लोग ओनली द टर्मिनोलॉजीज दैट आर यूज्ड उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सी, मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप लोगों को समझाऊं, लेकिन द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन जो है इट्सल्फ डिमांड्स कि आपको यू हैव टू राइट द आंसर इन इंग्लिश ओनली। सो if you have to write the answer in English, you should know the answer in English, and for that I have to dictate in English. सो कैसे फ्लो होगा लेक्चर का? देखो, एक हमारे पास ना टेलीग्राम चैनल है। आप सर्च करोगे फैक्ट्री इंस्पेक्टर करके, फैक्ट्री इंस्पेक्टर जेपीएससी। मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में ना उस चैनल का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लिंक फॉर टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दूंगा। उससे क्या होगा, देखो, जो भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे उसको मैं सीधा उसका नोट्स जो भी होगा, जो भी हम यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर करेंगे, दैट विल बी अपलोडेड इन द टेलीग्राम चैनल। वहां पर डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा मैं। उससे क्या होगा कि आप लोग को साथ साथ नोट्स भी मिलता रहेगा। कैसा लेक्चर प्रोसेस होगा उस पर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ मैं क्लास में ही आप लोगों को नोट्स बनवा दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो यू शुड हैव द प्रॉपर नोट्स सो दैट यू कैन रिवाइज इट, यू कैन learn the different concepts and different theories, and then उसको आप एग्जाम में लिख के आ सको। तो नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर नोट्स मेकिंग व्हाट विल बी डूइंग कि आई विल बी लाइक, अगर मैंने ऑक्यूपेशनल हेल्थ स्टार्ट किया तो व्हाट आई विल बी डूइंग कि मैं इस टॉपिक पे आपको सफिशिएंट नोट्स लिखवा दूंगा। पहले मैं आपको समझा दूंगा। फर्स्ट व्हाट आई विल डू विल बी एक्सप्लेन द थिंग्स, कि आपको स्टोरी के फॉर्म में थोड़ा समझ में आ जाए, है ना, ताकि आप याद रख पाओ, रिलेट कर पाओ चीजों को, ठीक है। एंड देन आई विल गिव यू नोट्स। जब मैं आपको फिर इसका डेफिनेशन लिखाऊंगा कि व्हाट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ, तो आपको साथ साथ क्लास में नोट्स भी बनाते रहना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू गेट वन कॉपी, वन फ्रेश कॉपी, गेट अ फ्रेश कॉपी और रजिस्टर, ठीक है। और उसके अंदर आप टॉपिक वाइज या डे वाइज या लेक्चर वाइज, जैसा भी आप चाहो, डे वन या लेक्चर वन, ऐसे करके नोट्स बनाते हो। जब मैं आपको बोलूंगा कि ओके कम एंड राइट या नोट इट डाउन, देन यू हैव टू राइट। If we are starting occupational health, you have to give the topic occupational health. Listen to what I speak, what we explain in the class. Then, when I ask you to please note down, you note down. That would be the note patterns, how you will be going to make the notes. Okay. Furthermore, I would not be writing the entire notes over here. See, I will not be writing the entire notes, because that would like make it very slow and make the video content also very large.
सो आई विल डिक्टेट इट, और मैं आप लोगों को डिक्टेट कर दूंगा सारे टॉपिक, सारे नोट्स, आप उसको नोट डाउन कर लेना। जो डिफिकल्ट टर्म्स होंगे, डिफिकल्ट टर्म्स, या फिर जिसका स्पेलिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, दैट आई विल डेफिनेटली राइट इट ओवर हियर, सो दैट यू डू नॉट मेक मिस्टेक्स, so that I can do. And after the completion of the entire topic, after the completion of the entire topic, what we will be doing, like I'll be giving you practice questions. I'll be giving you practice question from the topic. Like for example, the first topic we have covered industrial safety. So I will give you questions. After I complete the topic, I will give you two, three questions. That is, what is industrial safety? Industrial safety. Question number two. What is difference between risk and hazard? What is the difference between risk and hazard? Okay, like this. We will listen, note down some questions. What you have to do is you have to try to frame an answer for it. See, why this is important? This is important because आपके पास सारा notes होगा, ठीक है? You will have all the materials, आपको सब कुछ पता भी होगा कि what is industrial safety, what is IS, लेकिन you not be able to frame an answer. Framing an answer is entirely different technique, or we can say a different like talent. You have the entire things that you know about the questions. You have the entire body part, entire things, all the details. But how to start and how to frame in a structured way, that would be missing. So in order to make sure what we will be doing, I will be giving you these questions and you have to write an answer for it. Furthermore, to make your preparation even more definite, what we will do, I'll provide you the a contact number or a mail ID. No, a contact number would sufficient for a WhatsApp number. I will give you a WhatsApp number. You write an answer for these questions. You can scan it and you can send it on my WhatsApp number. Okay. I will go through the answers of each of you. Mark it what is correct, what is wrong. Okay. And then we will discuss the model answer. At the end, what we will be discussing the model answer. So suppose topic one we have completed entirely. So in topic one, I have given you sufficient notes, material, everything. So in topic one, I'll be giving you some questions. You will be writing that. Then you will be sending me that questions answers on the WhatsApp or whatever channel I provide you. And then what you will do, we will discuss the answer, or I will provide you the model answer. Model answer. Okay. This I will be uploading it on Telegram channel. All the materials will be uploaded on the Telegram channel. So all those who have not yet joined the Telegram channel, from now on regular videos, I'll try to like finish this entire syllabus before like 15th of November. Before 15th of November, max to max, it will go up to 20th November. So you will have sufficient time, or 25th of November, say. 10 days you can take extra, 25th November. So even though you will be having max to max 10, 12 days for revision, proper revision. Okay. So those who have not yet joined the Telegram channel, do join it and subscribe to my channel. And in that channel, there is one playlist with the name of Factory Inspector. Factory Inspector playlist, where already there are a few videos uploaded on it. Save that list. I will be adding more videos to that list only. Okay. So what thing we have discussed? First of all, how we are going to proceed with the videos in the coming days. And from now on, I will be trying to upload two, three videos like per week, like maybe four videos as well, so that we complete it by 25th of November. Because there are holidays in between, Diwalis and all, Chhat and all. So by 25th, we will try to complete this entire syllabus of factory inspector.
I'll be providing you notes. I'll be providing you the questions as well, ready questions. You will be writing the answers so that you practice it. And then I will be providing you what? Model answers as well. So this is the way we are going to proceed with this entire series. Um, just be prepared for it. If you stay with me, अगर आप पूरे एंड तक इस सीरीज को आप फॉलो करेंगे, आई एम वेरी श्योर कि यू आर गोइंग टू मेक थ्रू द एग्जामिनेशन, है ना? आप श्योरली मैं आपको सफिशिएंट कंटेंट दे दूंगा, बिल्कुल बिंदास तरीके से, है ना? बिल्कुल बिंदास तरीके से वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड एंड अप आल्सो। विल नॉट आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू लाइक इन द मिडल, आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा मैं, है ना? तो आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू इन द मिडल। मैं आपको पूरा एंड तक ये सारा सिलेबस कवर करवाऊंगा, और सारा सिलेबस के साथ साथ व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू एडिशनल इज एन लाइक द मॉडल क्वेश्चंस एंड आंसर्स एज वेल। और इसके बाद जो आपका यहाँ पर एक पोर्शन बचता है, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, देखो इसके लिए आपको खुद करना होगा, दिस यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ओके, कमेंट करके बताना कि भाई इसका भी अगर आपको चाहिए होगा, देन डू कमेंट कि सर इसका भी लेके आओ, सो आई विल अरेंज कि इसका कैसे वी हैव टू डू। बट सिंस दिस इज ओनली क्वालिफाइंग, सो आई रिकमेंड कि आप इसका खुद कर लो ना, क्यों टाइम वेस्ट करके हम इसको, इसके इससे ज्यादा फोकस अगर हम नीचे वाले सिलेबस पे करेंगे तो दैट वुड बी स्कोरिंग एंड काउंट होगा उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो ये आप खुद से कर लेना, ठीक है ना? दिस टू क्वेश्चन, देखो अगर डेडिकेशन के साथ में लगे रहोगे, पढ़ते रहोगे, और मैं आप लोगों को मतलब इतना इंश्योर करता हूँ कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा, और आप लोग बिल्कुल बिंदास तरीके से इसको क्रैक कर लोगे। हाँ, आपको खुद का लेबर पुट इन करना है, टाइम देना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू पुट इन। So this is all with this video. In the next video, we will be taking out the topic that is left from the topic number one. Thank you.